Socio-economic empowerment is meaningless without legal empowerment. Therefore, creating legal awareness amongst the underprivileged groups regarding their entitlements is the next step of DFW and Matrichaya's collaboration. Vocational training programs have been extremely successful in providing economic empowerment to underprivileged women. With the help of Dining for Women, over 1,000 females have been trained in various crafts such as stitching, zari craft, applique, jewelry making, beautician training, mushroom cultivation, and a host of other crafts. Let us meet some of these empowered women. My name is Ansuja. मैं मातृछाया में ट्रेनिंग ली हुई हूँ और मैं यहाँ एप्लिक का ट्रेनिंग की हुई हूँ और मैं एप्लिक के साथ साथ मशरूम का भी पेंटिंग का भी ट्रेनिंग की हूँ और इसके साथ साथ मातृछाया मुझे और एक मौका मिला जो मैं यहाँ ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरी यह कोशिश रहेगी कि हर महिला आगे आए और अपना पैर पे खड़े हो और अपने परिवार का सहयोग करें। The women's bonds with Matrichaya have helped them realize that they do not need to lead their lives tied to the shackles of poverty and deprivation, that there is hope for them, someone to guide them and shape them into self-reliant individuals. The problems generally faced by the trainees, once trained in a craft, are the procurement of raw materials at affordable prices, finding someone to act as a guarantor for them, establishing contact with retailers and government agencies. There is also an absence of any form of insurance for their products and a lack of proper storage space for the finished goods. Matrichaya acts as the trainer, guarantor, lender, as well as the contact point between the government contractors and the trained ladies. The average income generated depends on the trade. Beauty parlor trainees earn between 2,500 to 10,000 rupees per month. Stitching and zari craft also bring in a monthly income ranging from 4,000 to 12,000 rupees per month on an average. Therefore, these women trainees, earlier solely dependent on their spouses, now bring in an additional income ranging from anything between 2,000 to 12,000 rupees per month. का थोड़ा अपने परिवार के बारे में आप कैसे बढ़ी और अभी क्या कर रही है, मातृछाया से आप कैसे जुड़ी और अभी आप मतलब और क्या प्रगति आपका हो रहा है, ये बता दीजिए। जब हम लोग मातृछाया से जुट गए ना तो हम लोग को साबुन बनाना सिखाया गया, फिनाइल बनाना सिखाया। आपको क्या फायदा हो रहा है? उससे फायदा हो रहा है मैम कि हम लोग जैसे हम अपना कोई बच्चा लोग हम लोग को पैसा मांगता था, मम्मी पैसा दो, तो हम लोग के पास पैसे नहीं रहते थे, पापा को आने दो तब पैसा देंगे, तो अभी हम लोग के पास अपने हाथ में पैसा रहता है, बच्चा लोग मांगते हैं तो हम लोग का जरूरत का पूरा कर देते हैं। और आगे क्या करना चाहते हैं? आगे और भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, चूड़ी लाका चूड़ी बनाना। अभी यहाँ जहाँ देख रहे हैं आप लोग प्रदर्शनी में लगा जूट का काम हो रहा है, वो भी हम लोग मातृछाया मैडम से सीखना चाहते हैं कि वो हम लोग को सिखाए और हम लोग अपना रोजगार को आगे बढ़ाएं। अच्छा, और मशरूम के बारे में बताइए आप। मशरूम कैसे सीखे? मैम ही सिखाई, मैम के थ्रू से ही हुआ, मातृछाया के थ्रू से ही हम लोग कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लिए। उसके बाद डाइनिंग फॉर वुमेन की तरफ से इनका हेल्प हुआ था मशरूम कल्टीवेशन में। और ये आप अपना मशरूम थोड़ा दिखाइएगा, आप लेके आई हैं? दिखाइए मशरूम, साबुन भी है, साबुन भी, अच्छा फिनाइल भी बनाती है। और ये सब जो है वो ये अपना जो ऋण लेती है ना तो यही सब प्रोडक्ट्स करके अपना बेचती है। अच्छा। Nandi is currently standing for elections to the Nagri Village Panchayat, the rural local government body, and we wish her all success. With 3 sons to care for and a husband who was unemployed, Bachchan Devi had no means of livelihood when she came under the Matrichaya umbrella. Via several vocational training programs, she learned stitching, zari craft and applique. Today, Bachchan Devi owns a stitching center and earns around 10,000 rupees a month. She is also a social entrepreneur in her own right, as she rallies forces to fight social evils in her own village community. मेरा नाम बचन देवी है और मेरा पता सुगुरहुट्टू कांके।
एक बस्ती से आती हूँ हम यहाँ। अभी हम यहाँ पर ही करीबन माँ से 10 साल पहले मातृछाया एनजीओ से जुड़ी हूँ और ये एनजीओ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हमने एक पेपर में हमारे गांव का व्यक्ति पढ़ रहे थे, उस पेपर में हमने सुना उनका नाम मातृछाया। हमारे मन में ऐसा हुआ कि मातृछाया है तो जरूर एक माँ का आसरा। मेरी माँ का नाम है चंचला मिश्रा, जो कि अभी इतनी महिलाओं को आश्रय दे रही हैं। उनसे मैं 10 साल से, मेरे गांव वाले सभी बोलते थे कि कहाँ जाती हो, क्या करती हो, लेकिन मैं जब तक माँ का प्रूफ नहीं देखे तब तक हम कोई किसी से कुछ ऐसा बात नहीं किए। जब हम देखें कि एक पैदा की हुई माँ से भी बढ़ के मातृछाया है, क्यों ना हम इसमें जुड़े, उतना सुन के हम इसमें जुड़े। हमारे बच्चे उस समय करीबन 14 साल का था, सबसे बड़े बेटा, छोटा बेटा उससे 3 साल का छोटा था, उससे छोटा बेटा उससे 3 साल का, यानी 3 साल का बाद में मेरा 3 बेटा है, यानी अभी बड़ा बेटा मेरा 25 साल का हो गया। और जब हम अपने बच्चे भी हमसे ये बात पूछने लगे कि माँ कहाँ जाती हो, क्या करती हो, हम बोले बताएंगे बेटा, लेकिन इस वक्त नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम उनका पहले जान रहे हैं कि वो है क्या। जब हम जाने कि एक महिलाओं को बहुत मजबूत बनाना चाहती हैं, उनके अंदर में ये इच्छाएं हैं, हमने इनसे जुड़ गए। Jharkhand has some of the worst indicators for health in India. The majority of villagers still get their health care from faith healers, quacks, and self proclaimed divinities. The purpose of the Health Awareness Program is to educate people in the slums and villages on health, nutrition, and sanitation. We train community health workers and teams of health activists in every village and slums who can locally plan for health needs and educate the local community. Empowerment is basic to the success of the project. The goal is for the training program to be virtually taken over by the villagers and be self sustaining. My name is Dr. Uday Pathak. After living abroad for 20 years, I'm back to serve Matrichaya. Since coming here, there have been a lot of problems which I have seen in children, malnutrition being very high on the list. About 58% of Jharkhand children are malnourished, 90% are anemic, and the worm infestation and worm load is pretty high. Even if we go by the Millennium Development Goals that has been set up, we are probably far behind, much worse than Sub-Saharan Africa in terms of our numbers. The problem is that this is a hilly area. Immunization rates are down at about 13% with fully immunized children. The infant mortality rate in this country is 53 per thousand, which is probably the highest. The maternal mortality rate is 17 per thousand. Most of the patients I see are diarrheas, infections of the lung, pneumonias. Most of them are preventable by vaccinations and by other means. At the same time, poverty being a major issue, and the government of India in Jharkhand only provides for 6 of the 22 vaccines now available. With Matrichaya, we have done some camps for immunization. We have done child health checks. It's possible. We would like to at least add a certain number of vaccines to the infant schedule which are not included from coming through. We would like to make Matrichaya a center for vaccination and on vaccination research. I feel that Matrichaya is doing a great job and I wish it all the future success. Thank you. Just like Sunena, Anshu, Bachchan Devi, and Nandi, many young girls and women have experienced their lives being shaped and transformed with the support of Dining for Women and Matrichaya. Educated, aware, and empowered. Thank you for supporting 137 children and 235 women attain basic literacy. You have also helped provide 380 women a means of livelihood through vocational training. Thank you for helping transform
1,263 lives directly and countless others through them. Thank you, Dining for Women. Thank you, Dining for Women, for helping me.